हम शांति। ये 20 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार है। आज का मुरली का गीत है कि जिसके साथ ही भगवान, उनके आंधी तूफान क्या करेंगे। तो यही बाबा का टॉपिक है। और मम्मा बाबा का इतना योग में तीव्रता था, इतने योग तपस्या का ज्वाला स्वरूप दोनों ने अवस्था बनाई थी कि मन बिल्कुल कंट्रोल में था। उनके लिए ये गर्व की बात थी, ये सम्मान की बात थी कि मेरा मन कंट्रोल में रहना चाहिए, कर्मेंद्र कंट्रोल में रहना चाहिए। तो मम्मा बाबा का एक ही इंटरेस्ट था कि शिव बाबा की याद में रहना है। तो इस सप्ताह की मुरलियों का एक ये टॉपिक चालू रहा है कि हमारा साधना का गर्व होना चाहिए कि सब बातें मेरी साधना से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मेरी साधना सब बातों से बड़ा होना चाहिए। तो सोमवार की मुरली में ब्रह्म बाबा याद कर रहा था कि ज्ञान से पहले उन्होंने कई सन्यासियों को भी देखा था जो कभी भीख नहीं मांगते हैं। ऐसे ऋषि लोग, ऐसे कई मंक्स नन्स होते हैं जो बस अपनी साधना में ही मस्त है। वो कोई मटेरियलिज्म, पॉपुलैरिटी, संस्था, पोजीशन, ऐसे फॉलोअर्स बनाने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। बस मुझे अपनी साधना, मुझे अपना भगवान को ही याद करना है। तो इसमें ही लगे हुए रहते हैं। तो जो उनकी आवश्यकता है वो पहुंच ही जाती है उनके पास, क्योंकि अपनी साधना को बड़ा समझते हैं। तो गृहस्थी जीवन में ये ऑपोजिट हो गया ना, क्योंकि हम अपनी ताकत का आधार फैमिली, संपत्ति, एजुकेशन, पोजीशन आदि आदि उन बातों पर ताकत कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ये अभी तुम्हें भोगी से योगी बनना है। तो योगी माना ही एक पल, एक भरोसा, कि केवल योग का भरोसा, योग से ही सब कुछ। तो बाबा कह रहा है कि ये समय ऐसा है कि सब तूफान आपके पास आती रहेंगी, विकारों का, मनसा का, कर्मेंद्रियों का, कर्म भोग का, फिर प्रैक्टिकल जैसे प्रकृति का भी तूफान, फाइनेंसेस का तूफान, सब कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा। परंतु आपका यदि ज्वालामुखी याद है तो ये सब तूफान आपके मन में कोई लेप छेप नहीं डाल सकता। तो मामा बाबा की ये अवस्था बहुत पक्की थी। तो आज का ओम शांति भवन का भोग संदेश में बाबा यही टॉपिक उठा रहा है कि बच्चे अपनी ताकत से उतरते ही रहते हैं। एक दिवस के अंदर भी कुछ तूफान आवे ही भी नहीं तो भी उतरते रहते हैं। बच्चों की अवस्था कभी बहुत ऊंची और कभी नीचे। मामा बाबा ने ऐसा तपस्या दृढ़ता से की कि उन्होंने लक्ष्य रखा कि मेरा जो योग की अवस्था है दिवस में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कि जितनी तीव्रता अमृत वेला थी, मम्मा बाबा ने कर्म में ही वही योग का अवसर चालू रखा। तो उन्होंने दृढ़ता रखा कि बस मेरा मन जो मैं, जैसे मैं चलाऊं ऐसे ही करना चाहिए। तो उन्होंने लक्ष्य रखा कि कर्म करते जैसे अमृत वेला का योग था वैसे ही रहना चाहिए। तो बाबा कहता है कि बच्चों का भी ऐसा ही हॉबी होना चाहिए
कि मुझे बस शिव बाबा से योग द्वारा बरसा लेना है। फिर हर आदमी का अपना हॉबी इंटरेस्ट होता है, और कई इंटरेस्ट अच्छे होते हैं, समझो एक्सरसाइज होते हैं, तो ऐसे अच्छे हॉबीज़ हैं तो कर सकते हैं। परंतु ये भी चेकिंग की बात है कि ये सब हॉबीज़ इंटरेस्ट मेरे को किस प्रकार से खींचते हैं, मेरी आइडेंटिटी उस आधार पर है। क्योंकि कई हॉबीज़ मेंटल हेल्थ को भी हेल्प करती हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि तुम योगी तो आत्माएं हो, तो वास्तव में तुम्हारा एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए। तो कैसे आप बैलेंस रख सकते हो कि अंदर कोई भी लगाव ना हो, क्योंकि ये भी एक सूक्ष्म लगाव हमको देह में खींच करके रख सकता है, ये हॉबीज और इंटरेस्ट। तो मामा बाबा की ऐसी सारी दुनिया अंदर से भूली हुई थी, तो फिर उन्हों के लिए राधे कृष्ण का नेक्स्ट जन्म की स्मृति जैसे बहुत ताज़ी थी। जैसे अब भी ही मैं कृष्ण बनने वाला, अब भी ही मैं लक्ष्मी बनने वाली। तो ये रविवार की मुरली में था, 18 जनवरी की मुरली में था ना, कि जो अपरोक्ष था कि आप देवता थे, फरिश्ता थे, वो आपकी आत्मा में पीछे चला गया था ना। तो मामा बाबा ने इतना तीव्र योग लगा करके जो पीछे थे वो आगे ही बिल्कुल प्रकट हो गया। तो दूसरे भी अनुभव करते थे कि ये तो श्री कृष्ण की आत्मा है, ये तो लक्ष्मी, ये तो देवी है। तो यही अवस्था उनकी स्मृति में थी, तो सब अनुभव भी करते थे। और लास्ट में शांतिवन के भोग संदेश में बाबा याद दिलवा रहा है कि ऐसी योग की अवस्था से आपका हर संकल्प भी सिद्ध हो सकता है। शिव बाबा देखता है कि इतने ब्राह्मण पैदा हुए हैं ब्रह्मा बाबा के संकल्प से। ब्रह्मा बाबा ने हम सबको याद किया, तो इसलिए हम ब्राह्मण बने हैं। और इतने सब यज्ञ की वृद्धि हुई है ब्रह्मा बाबा के संकल्पों से। तो बाबा समझा रहा है कि आप जितने योग में आगे बढ़ेंगे, तो आपका शुद्ध संकल्प साकार होता जाएगा। तो मेरा भी अनुभव इसमें बहुत अच्छा रहा है, चाहे स्व की साधना है, चाहे सेवा है, चाहे लौकिक जॉब करियर है, चाहे फैमिली सर्कमस्टेंसेस है, आप भी योग का प्रयोग कर सकते हो। मेरा अनुभव इसका अच्छा रहा है। संकल्प जैसे एक बीज है, और आप बीज जैसे ड्रामा में रख दो, ड्रामा की धरनी में डाल दो। फिर योग धूप है, पानी है, इसका खुराक है। तो योग से इस संकल्प में जैसे ताकत भरते चलो, और कुछ समय से यह तपस्या करनी पड़ेगी। फिर समय राइट है तो वो बीज का फल जरूर ड्रामा में पैदा होगा। आप ट्राई करके देखना। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 20th of January 2022. The song played before today's Murli is "What Storms Can Affect the One Whose Companion is God?" And so that's the theme that Baba's taking up. Mama and Baba had such an intensity of yoga that for them this world was forgotten. Storms would come, happiness would come, praise would come, defamation would come, karmic accounts of the body would come, and celebrations would come. Whatever was coming in the drama,
it was insignificant in front of their stage of yoga. For them, remembering Shiv Baba was all they needed. And it's been a theme of this week's Murlis. You'll remember in Monday's Murli, Baba was recalling seeing sannyasis who had no desire to take from anyone. They just had this pride in their own spiritual endeavor. Such devotees, they might live in a cave somewhere, in a hut somewhere, and they just feel that through their meditation, everything they need will come. And they don't need to chase anything. They don't need to be popular. They don't need materialism or positions or possessions. But just their spiritual endeavor is what they need. And this was the stage that my man Baba had created. And of course, for us, we really know who Shiv Baba is. So the yoga we can generate now, the access we've got now to Shiv Baba, we don't have in Bhakti, so we can really be fulfilled. And yoga has this magic that it can remove obstacles, it can bring success. And so Baba is saying to us that so many things are going to happen in this confluence age life. You're going to have storms in your mind, karmic accounts of the body, practical storms of nature, all sorts of things. Finances will go up and down. Sometimes you'll have success, sometimes failures will come. But Baba is wanting us to hold on to our throne of our stage. And that's the main message Baba's giving us in the Bhog message from Shanti Bhavan as well. That children keep coming down from their high throne. And because we're up and down, even in the course of one day, even if nothing happens, just like ordinary day, we're still up and down. I was observing that we're not able to hold an intensity to our yoga for very long in the day. And this is what Mama and Baba were very, very good at. They not only made their yoga intensive at Amrit Vela or when they were sitting in yoga, but they were able to do it even while performing actions, and they were determined to make their yoga equally intensive while performing actions as it was at Amrit Vela. And so Baba's saying that he made Shiv Baba's remembrance, the subtle inheritance from Shiv Baba of the powers, that was his hobby. And it's interesting, isn't it, how hobbies as well, they're connected with the nature of this body, aren't they? And hobbies and interests, on one side, they're not bad things, and they sustain the mental health, don't they, of souls, and also the health of the body sometimes, depending on the hobby. And so in some ways, they're good things to have, but it is true, isn't it, how they do hold us down here in some way, an attachment to a hobby, an interest, or some level of, it can be even like a type of habit, really. All of that, it can be an identity also. Our hobbies can be, well, this is who I am, this is what I'm about. So it's true that it can hold us down in the body. So Baba's saying, have a look at that as well. Have a look at your interests, and are they pulling you? And can you transform your interest to just having yoga with Shiv Baba? And that might not mean that you don't do. Like, for example, if you're exercising or something, it's a good thing to do. But the internal interest is something that Baba wants connected up towards Shiv Baba. And in today's
And for Mama and Baba, their future form of being Radhe and Krishna, it had become very real for them because they had disconnected their intellect from their old body and this old world. Then it was something that came up in Sunday's Murli, that which is in your subconsciousness, it becomes conscious. And so your angelic form, your deity form, it comes from the back of your soul to the front of your soul. And so for Mama and Baba, it was very real for them that they just had this awareness that I'm just about to leave this body and go and become Krishna. I'm going to go and become Lakshmi. And other souls really felt that from them as well. People used to see Mama and really feel she was a goddess. And similarly with Baba, people really felt that from them. So this is what Baba is gearing us towards, to also become like that. And in the Bhog message from Shantivan, Baba is reminding us as to how powerful our thoughts will become once we develop that intensive stage of yoga. Because Brahma Baba did have that intensive stage, his thoughts then were able to achieve so much. So Shiv Baba is saying that all of the Brahmins are born through the thoughts of Brahma because Baba remembered us all. And so then we've been attracted in the drama. And then Baba had all different thoughts of service, different thoughts of benefiting souls. And as an angel, he works on the level of thought all the time. And so it's thoughts that are shaping the drama. Baba's words and actions, they were powerful, but thoughts are actually able to achieve a lot more, and there's more unlimited. So those thoughts, when they're backed up with a very intensive yoga, they're like seeds being planted into the drama. And the yoga is like the sunshine and the water and the nourishment. So then those thoughts that the Brahmins have, they will gain fruit. So you can experiment with that. I've had many good experiences in different parts of my life, Lokik life, like Lokik career, practical family life, as well as my own spiritual transformation and also in service. So in all areas of life, I've had really good experiences of just creating a positive thought and vision and then filling that with yoga over a period of time. And then just seeing how that thought, that seed, bears fruit. And it happens at its own time, but just by continually feeding it does work. So silence and thoughts, they work together in such a way that you get a very, very beautiful fruit. Om Shanti.